Now the next disease that we are going to take is giardiasis or giardiasis. Okay, same like amoebiasis, there is giardiasis, but the causative agent is different. Okay, the causative agent for giardiasis is Giardia intestinalis or Giardia lamblia. Okay, these are the two causative agents for this disease, and they are zooflagellates, we can say, kind of protozoa, and this is the first human parasitic pathogen discovered. Okay, this is first human parasitic pathogen discovered. Now, अब ये Giardia intestinalis है या Giardia lamblia, it is very much similar to our Entamoeba histolytica. How? Because Entamoeba histolytica also affects our GI tract, and this also affects our GI tract. Okay, now that उसकी infective stage भी trophozoite थी. Its infective stage is also trophozoite. And one more thing, Entamoeba histolytica is also having monogenetic type of life cycle, and this is also having the monogenetic type of life cycle. Okay, दोनों की monogenetic type of life cycle है. So it is also having monogenetic type of life cycle, means involving only one host. That is humans. Now, and it is also going to affect our GI tract. ये भी हमारे GI tract को affect करेगा. Okay. Now, what is the transmission of this disease, of transmission of this pathogen? Likewise, we have studied in that Entamoeba histolytica that its transmission, mode of transmission is feco-oral route. So इसका भी feco-oral route होगा. Okay, so the mode of transmission will be feco-oral route. So the mode of transmission for this disease will be the feco-oral route. Ab how this fecal material will come in the contact with the food or come in the contact with oral cavity? Again by the presence of any kind of vector. कुछ vector या कुछ carrier होना चाहिए. तो यहाँ पर भी that vector will be only housefly. Okay. So mode of transmission में feco-oral route by carrier housefly होगा इसका भी. Okay. Now the housefly gets the spores of this disease. Okay. Now, what is the infective stage? Our infective stage will be trophozoite only. That too encysted trophozoite. ये ट्रोफोजोइड भी एक सिस्ट के अंदर होगा, कवरिंग अ हार्ड कवरिंग. ओके, सो हम उसको क्या बोलेंगे? दैट विल बी एनसिस्टेड ट्रोफोजोइड. नाउ दिस एनसिस्टेड ट्रोफोजोइड विल अगेन कम इनटू आवर बॉडी. कैसे आएगा एनसिस्टेड ट्रोफोजोइड? come into our body with contaminated food and water. Now, contaminated food and water यहाँ से आया हमारे स्टमक में,
बट हमारे स्टमक में तो कुछ बैरियर्स प्रेजेंट है, इंसिस्टेड होने के कारण दैट विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम दिस बैरियर्स, वो यहाँ से प्रिवेंट हो गया, ओके, दैट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम द स्टमक बिकॉज ऑफ हैविंग द इंसिस्टेशन और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ cyst. So now from the stomach it will go into the small intestine and एक particular जगह है इसकी, what is that? Upper part of small intestine. It lives in upper part of small intestine for many time. बहुत time के लिए वो upper part of small intestine में रहता है. That will be duodenum and jejunum. It will reside into our upper small intestine for duration of time, may be possible for 1 week or 2 weeks, okay. So how it will resides in our upper small intestine? They are having some kind of adhesive pads we can say, और adhesive disc होती है उनके पास में. So adhesive pads या adhesive disc से क्या करेंगे? They will be on our wall. They because of that adhesive pad they will stick to the wall of our intestine. Okay, वो हमारे intestine की wall से stick हो जाएंगे. Okay. So now small intestine में क्या होगा? Stick to our wall of intestine by adhesive pads. Okay. Now after some time, कुछ टाइम के बाद में क्या होगा? And adhesive पैड से जब हमारी इंटेस्टाइनल वॉल से वो जुड़ा रहता है, नाउ एट दैट टाइम वो क्या करेगा? अपना नंबर बढ़ाएगा. हाउ? बिकॉज दे आर टेकिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम अवर बॉडी. वो हमारी बॉडी से एडहेसिव पैड से इसीलिए जुड़ा है ताकि वो हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन ले सके, नरिशमेंट ले सके. बिकॉज डिवाइड होने के लिए उनको नरिशमेंट्स की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है. ओके. In the Entamoeba histolytica they are dividing, but at that time they have not been attached to the wall of our intestine. Okay. Now यहाँ पे वो हमारे wall से attach है, ये इनका एक characteristic feature है, that they are being attached to our intestinal wall by some kind of adhesive pads for taking more and more amount of nutrition. So ज़्यादा nutrition लेंगे तो they will get more and more amount of energy and they will be dividing more and more and increasing their number. Okay. So taking nourishment from our body. Now अब वो नरिशमेंट ले रहे हैं, उसके बाद में क्या होगा? They will start dividing. डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे बाय बाइनरी फिजन अगेन. दे विल बी डिवाइडिंग बाय बाइनरी फिजन अगेन. अब बाइनरी फिजन से वो डिवाइड होना चालू हो गए, उनका नंबर बढ़ना चालू हो गया. ओके. नाउ अब यहाँ पे जब वो आते हैं, नाउ दे आर बीइंग एक्सिस्टेड, दे आर बीइंग परफॉर्मिंग द एक्सिस्टेशन. ओके. डिवाइड होने के पहले वो अपना एक्सिस्टेशन परफॉर्म करेंगे. कहाँ पे? जब वो आए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में आए आफ्टर सम टाइम फॉर और वी कैन से दैट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे वर बीइंग अटैच्ड टू द duodenum एंड jejunum. उसके बाद में दे परफॉर्म देयर एक्सिस्टेशन. ओके. सो यहाँ पे दे परफॉर्म्ड देयर एक्सिस्टेशन. एक्सिस्टेशन होने के बाद में they were attached to the wall of our intestine by some kind of adhesive pads and they were also taking the nutrition from our own body. और न्यूट्रिशन लेने के बाद में they started to divide rapidly by asexual mode of reproduction. Okay. And when they started to divide again, they will be converted into encysted trophozoite. Why? Because young trophozoites will also show the protective nature against this environment. Okay. Likewise, the old trophozoite were coming in contact, were coming in the body of healthy person. They were in the
encysted form. So यहाँ पे भी they will show the same nature, encysted trophozoite, because this encystation is the protective barrier, protective nature of this parasites. Okay. Now this have become the encysted trophozoite, and through the fecal matter, or we can say that due by the process of defecation, they will be again in our environment. Now from the environment वापस से encysted trophozoite and taking contaminated food and water, the same procedure will be happening again and again. Okay. Now what are the symptoms of this disease? Will be having extreme epigastric pain, extreme epigastric pain. Extreme pain will be felt by one organism or by one human being who is suffering from this disease. Okay, बहुत ज़्यादा adverse pain we can say. Now second होगा diarrhea, and third will be our dysentery. Okay. These are the some symptoms which are shown by the human being which has been suffering from the giardiasis, and the causative agent for giardiasis is Giardia intestinalis or Giardia lambulis. These are one kind of zooflagellates only, and this species, or these are the only first human parasites which have been discovered. Okay, remember this, first human parasite pathogen has been discovered, and monogenetic type of life cycle they are also performing, and they are also involving only one kind of host. That's why हमने उनको बोला monogenetic. Okay. ये हमारे सिर्फ GI tract को affect करते हैं, like Entamoeba histolytica. These are not going to affect our liver. Okay. These are only going to affect our GI tract. Mode of transmission will be the same, fecal-oral route, and by the one kind of vector or carrier we can say, that is housefly. Okay. Now infective stage, encysted type of trophozoite will be the infective stage, and it is also a larval stage. लार्वा के फॉर्म में वो हमारी बॉडी में अफेक्ट करेगा. Encysted trophozoite will enter into our body by through contaminated food and water. Contaminated food and water से हमारी बॉडी में आया, हमारी बॉडी में आने के बाद में हमारे स्टमक में गया, बट स्टमक में वो that will be escaped because there will be no what we can say, there will be no उन पर digestive juices का कोई असर नहीं होगा. There will be no effect of the digestive juices over these kind of bacteria. Okay. Now स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ज़्यादा अपना टाइम कहाँ बिताता है, इनटू अवर अपर स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज डुओडेनम एंड जेजुनम. अब यहाँ पे आ गया, उसके बाद में दैट विल डू द एक्सिस्टेशन. अब वो अपनी जो सिस्ट है, हार्ड कवरिंग है, उसको हटा देगा. वाई? बिकॉज इट इज इट ऑल्सो हैव टू टेक सम काइंड ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम अवर बॉडी. और अब इट इज कमिंग इन द फेवरेबल टाइप ऑफ कंडीशन वी कैन से. हमारे इंटेस्टाइन में इन ऑर्गेनिजम्स को एक फेवरेबल टाइप ऑफ कंडीशन मिलता है. अब फेवरेबल कंडीशन मिलने पर ही कोई ऑर्गेनिज्म अपना नंबर बढ़ाएगा या उसमें डिविजन करेगा. ओके. सो इन अवर इंटेस्टाइन दे आर गेटिंग सम काइंड ऑफ फेवरेबल कंडीशंस. तो फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी तब वो अपना नंबर बढ़ाएगा और एक्सिस्टेशन करेगा. Okay, now they are when increasing their number and dividing, and again that young trophozoites are coming. वो वापस से young trophozoite आए और they will be doing again encystation. तो encysted trophozoites है, and these encysted trophozoites are also called as spores, and that are eliminated from our body through the fecal matter. फीकल मैटर से वापस हमारी बॉडी से बाहर हो गए. ओके. सो दिस वाज ऑल अबाउट द giardiasis. ओके. नाउ द थर्ड डिसीज दैट वी आर गोइंग टू टेक इज अवर डाइजेनेटिक टाइप ऑफ डिसीज, दैट इज मलेरिया. ओके.